be showing you a small little report on the 14th National Ice Skating Championship that was held recently. My parents actually informed me that there is a ice skate opened in Gurgaon, so I was really excited that how would I be able to do this ice skate. When I came here, my coach said me that you have to work on it hard. Then over a period of time, then I started doing on good, and then so on I became a good skater. But then I wanted to make my India proud and my parents too, so I'm planning to go for Olympics. हर्षिता जब छोटी थी उसको डांस का शुरू से जैसे उसने म्यूज़िक सुनना शुरू किया, कभी भी रेडियो बजता या टीवी पे सॉन्ग बजता वो डांस करना शुरू कर देती। और क्योंकि एनर्जेटिक थी, हाइपर बच्चा थी, तो फॉर हॉबी वी पुट हर इन स्केटिंग। तो दोनों कंबाइन होके और उसने एंजॉय करना शुरू किया, धीरे धीरे लर्न करना शुरू किया। फिर हम लोगों को पता चला कि एक आइस स्केटिंग करके भी एक इवेंट होता है, एक चीज़ होती है, उसमें दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। तो उसको हम लोगों ने शुरू कराया और फर्स्ट डे से जिस दिन उसने स्केट पहनी उसी दिन से शी वॉज लाइक कि शी वॉज बॉर्न फॉर दिस स्पोर्ट एंड शी लव्ड इट, क्योंकि दोनों चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। स्केटिंग स्पोर्ट है, एक उसमें एंड्योरेंस चाहिए, आपको करेज चाहिए, गिरने का डर नहीं हो, और उसमें बॉडी में रिदम हो, डांस हो, जो कि वो नेचुरली टैलेंटेड है। तो दोनों चीज़ों ने उसे आगे बढ़ाया और उसने मेहनत भी। मैं पहले रोलर स्केटिंग करती थी, लेकिन मेरे जो कोच थे वो हमें आइस स्केटिंग कराने लाए, तो मुझे आइस स्केटिंग ज़्यादा पसंद आया, तो मैं वो स्टार्ट कर दिया मैंने। मुझे बहुत अच्छा लगता है स्केटिंग, आइस स्केटिंग करना, क्योंकि उसमें मज़ा आता है जब सेशंस होते हैं और डिस्को सेशंस होते हैं, उसमें साथ में यहाँ पे गाने बजते हैं और हमें बहुत सारा सीखने को भी मिलता है। काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में उसकी रुचि है, स्केटिंग करती है, रोलर, बैडमिंटन करती है, स्विमिंग। लेकिन जब उसे आइस स्केटिंग का पता चला तो उसे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। म्यूज़िक सेशंस होते हैं, अभी पढ़ाइयों के साथ थोड़ा मुश्किल होता है लाना, लेकिन उसको यहाँ बहुत इंटरेस्ट है। 3 साल पहले उसने हांगकांग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और सबसे छोटी लड़की थी इंडिया से जाने वाली। और मैं यही चाहती हूँ कि आगे ये और बढ़े और इंडिया के लिए मेडल लाए इन द इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स। आइस स्केटिंग मैंने ऐसे शुरू की, जब मैं 5 इयर्स का था मैं रोलर स्केटिंग करता था, तो मेरे कोचेस ने मेरी बॉडी लैंग्वेज देखी, हैंड मूवमेंट्स देखे, उन्होंने कहा कि तुम तो आइस स्केटिंग कर सकते हो, तुम इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर चाहो तो फिर उन्होंने मेरे को आइस स्केटिंग में डाला और फिर मैंने नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया और अक्टूबर में 2014 में एशियन जूनियर चैलेंज में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था हांगकांग में। मैंने रोलर स्केटिंग शुरू किया था जब मैं 3 साल का था। व्हेन आई वाज 5 मेरा फर्स्ट मेडल मैंने जीता रोलर स्केटिंग में, सिल्वर मेडल। और उसके बाद धीरे धीरे मैं आइस स्केटिंग करना चाहता था, तो फिर मैं आइस स्केटिंग चैम्पियनशिप में आया और 9th नेशनल चैम्पियनशिप में मैंने आइस स्केटिंग में गोल्ड मेडल जीता। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते मैंने आइस स्केटिंग में मलेशिया में जो चैम्पियनशिप थी, वर्ल्ड स्केटिंग चैम्पियनशिप, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और उसके बाद लास्ट ईयर नेशनल्स में मैंने गोल्ड मेडल जीता था आइस स्केटिंग के नेशनल्स में। सबसे पहले रोलर स्केटिंग स्टार्ट करी थी, तो रोलर स्केटिंग में मैं पहले स्पीड करती थी, तो मैंने अपना फर्स्ट मेडल रोहिणी में जीता था जब मैं 6 इयर्स की थी। बट आई हैव ऑल्सो बीन टू हांगकांग
for Asian Junior Ice Skating Challenge for internationals. बहुत ग्रेसफुल स्टेप्स होते हैं स्केटिंग में. इट मेक्स अस फ्लेक्सिबल. मैं रोज़ 1 to 2 आवर्स शूज़ पे प्रैक्टिस करती हूँ ऑफ आइस. और मैं रोज़ हर वीकेंड आती हूँ आइस स्केट प्रैक्टिस के लिए. मेरी उम्मीद है कि मैं कोई मेडल जीत कर आऊँगी. मैं वर्ल्ड चैम्पियन इन द स्पोर्ट रोलर स्केटिंग हूँ और मुझे 2015 में अर्जुन अवार्ड मिला है. एंड आइस स्केटिंग मैंने 2006 में पहले स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 22 इयर्स ओल्ड. एंड तब से लेके आज तक इन ऑल द नेशनल चैम्पियनशिप्स आई हैव बीन द सीनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट. एक चीज़ है कि इंडिया में बस थोड़े गिने चुने 4, 5 या 10 स्पोर्ट्स के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स को उतना पॉपुलैरिटी नहीं मिलता है. जब मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप का गोल्ड मेडल जीता तो मेरे पड़ोसी को भी मालूम नहीं था कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ. द प्रॉब्लम इज़ दैट हमारे पास पहली बात यह है कि फैसिलिटी नहीं है. एसोसिएशन थोड़ा बहुत हमको मदद करता है विच इज़ वेरी नाइस. हमको जब तक गवर्नमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट नहीं मिलता है, द मॉनेटरी सपोर्ट एंड टू सेंड अस टू डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, क्योंकि साल में हमारे एटलीस्ट 10 कॉम्पिटिशन होते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं. उसके लिए हम अगर 4 कॉम्पिटिशन भी जाते हैं तो अगले 5 साल में इंडिया से हम लोग विंटर ओलंपिक्स में मेडल्स भी ला सकते हैं. Ice skate has helped me in training and the staff here is very helpful and very supportive. They help me with my program and they help me improve my skating techniques. When I was in Muscat, I used to go for the GCC championships. That was the Gulf country championships. And then so after I came down, I participated in many state level championships inside India and as well as the national championships. And also I have participated in the Winter Asians and Malaysian Nationals. And in the future, I want to travel across the globe to train, not only to train but to compete for India and get a nice position and make my country proud. 14 नेशनल आइस फिगर स्केटिंग चैम्पियनशिप यहाँ पे हो रही है. करीब 16 राज्यों से 134 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ये स्पोर्ट्स पिछले 5 सालों में बहुत डेवलप किया इंडिया के अंदर में, और पिछले 5 सालों में इंडिया ने करीब 7 से 8 इंटरनेशनल मेडल इसमें अर्जित किए हैं. आइस स्केट वालों की तरफ से ये फैसिलिटी होने से और उन्होंने आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कोऑपरेशन के साथ में रेगुलर कंटिन्यूस यहाँ पर कैंप करते रहे हैं और ओपन नेशनल चैम्पियन भी होती रही है. इस वजह से ये स्पोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है. Well, I guess दोस्तों अब वक्त हो चला है to talk about one of the most beautiful sports in the country, a sport that has seen a good rise in the recent past few years thanks to the efforts of the organizers and the National Ice Skating Association of India. We've talked to them earlier also over here in the studios, and this time when we talk to them, we see a pleasant change in the way ice skating has taken shape within the country today. It's a pleasure to introduce all the 3 guests in the studio. First of all, we have with us Colonel S.C. Narang, who is the Director of the National Ice Skating Association of India. Namaskar, good evening. Namaskar. और उनके साथ we have a gentleman who's been a part of the studio discussions earlier also, Karan Rai. He is the organizer of the National Ice Skating Championship. Hi Karan, good evening. Good evening. And we have a very beautiful lady over here who is the coach of figure skating. Also herself has been a part of figure skating all her life. A pleasure to have her. We have Lyubov Timeva. Hi, good evening. Namaskar. Namaskar. Pleasure to hear you say namaskar. That's indeed a very good gesture. And thank you, ladies and gentlemen. Thank you for being a part. Colonel Narang, अगर मैं आपसे सीधे सीधे शुरू करूँ, हमने जब पहले आइस स्केटिंग की बात करी थी, we still remember you started off with a small number of kids for the ice skating championship, and today you're organizing the 14th national ice skating championship. एक बहुत लंबा सफ़र आप तय करके आ गए हैं. इतने सालों के अंदर अगर हम बात करते हैं, आपने किस तरह से आइस स्केटिंग को आज बदलते हुए देखा है देश के अंदर? अभी हम देख रहे हैं कि आइस स्केटिंग में जो इंटरेस्ट है बच्चों का बढ़ रहा है, और बच्चों से अधिक पेरेंट्स का बढ़ रहा है. पेरेंट्स ही चाहते हैं कि उनके बच्चे इस स्पोर्ट को अडॉप्ट करें, इसमें आगे बढ़ें. तो जहाँ पर शुरू में केवल 30-40 बच्चे ही नेशनल चैम्पियनशिप में आते थे, आज की तारीख में दे आर मोर देन 135 चिल्ड्रन पार्टिसिपेटिंग ओनली इन द फिगर स्केटिंग, एंड वी आर येट टू होल्ड द नेशनल चैम्पियनशिप ऑफ स्पीड स्केटिंग लेटर
part of this year, तो वहाँ पर तो we expect more than 200 or so. So the numbers is increasing fast. That means the parents as well as the children, they are adopting to this sport, which is basically a Olympic sport, and it is getting popular day by day over the country. That's nice. Karan, अगर मैं आपको conversation के अंदर लाऊं, you're the organizer of the entire championship that happens. So you've been associated with the championship from the very start of it. It's like Yes. almost like the child becoming into a grown-up child now. इस साल जब आपने 14th National Ice Skating Championship organize करवाई, तो कितने बदलाव आपने देखे, कितनी categories थी और बच्चों का जो participation रहा, how much did you see their active interest in the championship this year? Well, when you see the whole concept of skating. ice skating, when we started in December 2011, ice skate is the only platform in India which basically can give you an opportunity for anyone to see the sport of figure skating, speed skating, and ice hockey. All the three sports, they can experience it firsthand. And moreover, on top of that, when we've the trail that we have had till now, we've understood figure skating as a sport, as a discipline. We have made people, general masses, view the sport, understand that this is a discipline. It's an Olympic sport. It's an Olympic discipline that can be that can be easily watched, as well as training can be imparted. Talking about this year, the 14th Nationals, we saw a great growth in the talent which is there throughout the country. More than 150 participants have come for training camps, national training camps that have been organized. Calendars have been made throughout the year, and there are opportunities wherein children can get coaching from international coaches coming in, as well as our own national coaches who have represented India in roller as well as ice skating championships all around the world. So in a whole, when we say that the 14th National Championship was a great success, it is a steady growth, and it shows a great opportunity for us in the future, wherein it is steadily growing. Yes, and not just with not just with the participants, but also with the people who want to actually view and be a part of the sport, and they want to understand the sport. So we take out summer training activities, we take out group training classes which are available to general public and general audiences. And in the journey from 2011 till now, ice skate has seen more than 1.8 million people walking in. Wow. And that is a number in itself, wherein people have come to be a part of this sport, train, get coaching, or just enjoy the great sport of skating. And that's a good change. See, also let me just bring Luboy in the conversation over here. You've been in India for almost 5 years, right? And you're from Russia. Yes. So when you see these kids coming over here and being a part of the entire championship, you're training them for figure skating as a volunteer coach yourself. What kind of vibes do you get from these kids? Do you see the potential in them to be a part, to be able to play the sport and promote the sport actively? Yes, I actually do. I think the Indian children has a great potential in figure skating. Some of them are very flexible. They do yoga at schools, which helps a lot in figure skating. A lot of them already enrolled in roller skating, so it gives them a great start. So there are some differences in technique, obviously, in roller skating and figure skating, but still they learn jumps, they learn spirals and the skating style. So they can start from rollers and then they come for ice skating. So how did your basically journey start into figure skating? You've been a figure skater all your life, but what brought you to India to be a part of the Ice Skating Association over here and act as a volunteer coach? So I've been actually skating since I was 6, and then in my teenage years I had a trauma of the back, so I had to withdraw from sports, and life brought me absolutely in different field, in social sciences, so that's how I came to India. And here obviously I was missing skating, and then just I came to know there's a skating rink. So I ended up coming to Mr. Karan and talking to them that I would like to train kids voluntarily there, because I really adore this sport, and it was always my dream to come on the skating rink and just So you're living it. And I think it's also because of Colonel Narang over here. See, you've got people like Karan and Luboy on board, and I'm sure many more volunteers who are actively taking part and helping to promote and instill the sport in the kids जो आते हैं यहाँ पे. इस समय जब हम बात करें, आज भारत के अंदर कितनी ऐसी आइस स्केटिंग रिंग्स हैं, और जो दिल्ली की या गुड़गांव की जो खास तौर से है, उस रिंग के अंदर कितने चेंजेस आए हैं आज? Have there been any improvisations in the ring that you brought over the course of the years? Yes, आइस रिंग्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं. एक तो नेचुरल और दूसरे हैं जो कि इंडोर्स होते हैं.
नेचुरल में वी हैव गॉट द एडवांटेज कि हमारे इंडिया में places like Leh, Gulmarg, Shimla, Manali, they have got the natural ice rinks, but they are available only in the winter months, and there is plenty of ice which gets accumulated over there. और जहाँ तक इंडोर आइस स्केटिंग रिंक की बात है, वी गॉट वन इन आइस स्केट इन गुड़गांव, देन वी हैव गॉट इन वन इन कोचीन, एंड दे हैव बीन एट टाइम्स they have been coming up and then of course closing down for whatever reason, maybe because of commercial reasons. They were in Kolkata, they were in Ahmedabad, they were in places like Hyderabad, but then over a period of time they got closed because of maybe commercial reasons. But this ice rink at Ice Skate Gurgaon, it is getting popular day by day and the tendency is rising. So that is a very good sign that the parents and as well as the young children, they are taking interest in this and they are adopting this particular sport. पर इन बच्चों का फिल्ट्रेशन कैसे होता है? ये जो बच्चे अप्लाई करते हैं, आप लोग कुछ एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं? बिकॉज पूरे देश से बच्चे आते हैं जैसा बता रहे थे, तो ये बच्चे किस तरह से चयन इनका होता है कि सेलेक्ट किए जाते हैं, किस कैटेगरी में जा रहे हैं? हाउ डज ऑल दैट फंक्शन? ओके, ऐसा है कि आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, तो हमारी जो स्टेट एसोसिएशन हैं, सभी स्टेट्स में एसोसिएशन हैं मोस्टली, लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली एट्सेट्रा. सो सभी स्टेट से वहाँ के जो कोचेज हैं, दे मस्टर अप द चिल्ड्रन, उनको इकट्ठा करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं थ्रू आउट द ईयर, एंड व्हेन वी ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ आइस स्केटिंग, sometimes the camps, sometimes the competitions, then they come over here and they participate in this one. For example, इस साल में हमने 3 फिगर स्केटिंग कैंप ऑर्गेनाइज किए थे, मई में, जून में और एक अभी किया है सितंबर में. तो व्हेन वी ऑर्गेनाइज सच कैंप्स, दे टेक इंटरेस्ट, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पर आएंगे तो उनको अच्छा कंपटीशन मिलेगा, अच्छी इन्वायरमेंट मिलेगी और कुछ सीखने को भी मिलेगा और आगे बढ़ने को मिलेगा. और ऐसा करने से हम फिर उनको एक मौका देते हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं जो टॉप में आएंगे, हम उनको फिर एशियन कंपटीशंस में और इंटरनेशनल कंपटीशन में भेजते हैं. तो ये उनके लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चे जिन्होंने एशियन लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, वहाँ जाके केवल पार्टिसिपेट ही नहीं किया बल्कि मेडल्स भी लेकर आए हैं. ये बहुत खुशी की बात है और ऐसा दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. अभी अगस्त के महीने में हांगकांग में एशियन फिगर स्केटिंग ट्रॉफी कंपटीशन हुआ था. वहाँ पर एक बच्चा प्रियम तातेड़, वो वहाँ सिल्वर मेडल जीता उसने. तो हमें बहुत खुशी हुई कि यस, किसी बच्चे ने मेडल लिया है. और ये पहली बार नहीं है, ये एशियन लेवल पर हमारे बच्चे मेडल्स जीतते आए हैं. लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अभी हमारा स्टैंडर्ड उतना ऊंचा नहीं हुआ है कि वहाँ मेडल हम जीत पाएँ. पर एक बहुत अच्छा स्टार्टअप और इनिशिएशन है आपके एंड से. अगर करण मैं आपसे पूछूं, जब ये आप लोग टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, कितनी कैटेगरीज के अंदर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है, कितने बच्चे हर कैटेगरी में होते हैं इसके अंदर? हर टूर्नामेंट जो भी चैम्पियनशिप हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इससे पहले हम एक ट्रेनिंग कैंप रखवाते हैं. बेसिकली दिस ट्रेनिंग कैंप इज़ in a way a filtration process and a grouping process. This year in the 14th National Championship, we had groups which started with novice, we had juniors, we had intermediate, A and B, and we had a senior category. So with the overwhelming response that we have had each year, we have to divide each category into A and B. So each category has more than 20-25 kids who are enrolling and who are actively participating, and each kid who's coming forward, each child who's coming forward has a unique they have that unique spark in them to for the sport, for the for the concept of figure skating. So in all these disciplines, as per the association rules, as per the International Skating Union rules, the judges were present and they were marked and points were given, by which the championships results were declared. So every championship which is happening at ice skate from the past, be it the national championship or regional championships and state championships which come forward, we have seen that every year the quality and the ideas of these children are growing,
And as sir said, right now we are children are going outside, they are getting the international exposures. We have coaches like Lyubov here who are available throughout the year, and we're trying to get more coaches so that each participant who has who has the talent inside them, this talent can be nurtured, this talent can be polished well, and we can see a very, very bright future. I'm sure. With this. Yeah, I'm sure. Let me just bring Lubov in the conversation over here. Since you've been training these kids and you're talking about that these kids initially start off with the roller skates, and then when you get into figure skating, that's an altogether different game, but you know the knack and the technique of it. Yeah. So when you're training these kids, what age group of kids do you deal with? Any age group, or is a specific age group that first of all you deal with? Well, for now I have several age groups, so I teach advanced and basics. So in the basic I have like mother coming with her child, so she's 37 and her kid is like 9. So there I teach kids from like 6 and to adults. And in advanced skating I have 2 batches. One is 9 to 10, and they're actually international team. Indian girl, she just got a gold medal, and this competition of she will be 9 soon. And Russian girl and few Japanese kids as well. Okay, so you've got basically kids from all age groups. When you're dealing with these kids, you've got to train them, especially the ones which are the basic ones. You would have to start from the basic knack of letting them know how to get the hang of the entire figure skating. How difficult is it to go about that with them? Well, it's up to every child actually. So sometimes a child can come and he pick up really quick. So it's really up to a child. If he's very sporty, he will get it like maybe in 2 weeks. Sometimes we start with the basic from the ice skate crew team. So where they teach them essence of skating, like how to balance, how to go forward and backward. And then they shift to my group where we learn crossovers and start spins and different figure skating steps. Because some people want to focus on hockey, some want to be a figure skater, some want to be a speed skater. And how long does the duration of all of these trainings take you normally? It's like a 6-month thing or 5-month thing, or totally dependent upon the individual child who's learning basically? It depends on the individual child, but as we can say that we have a progress in 1 or 2 years. So the kids will come, yes. But figure skating is like a lifetime process. You keep improving and you can improvising yourself, right? Yes, improvising yourself. Okay, so Colonel, if I were to ask you, like she's telling us that approximately बच्चे को 1 या 2 साल लगते हैं सीखने के लिए, and उसके बाद you keep learning it throughout because it's a lifetime process. आपकी association बहुत सारे ऐसे states के साथ जुड़े हैं जहाँ से बच्चे आते हैं. Are you trying to reach across to kids also from the slightly B grade cities की अगर बात करें, ना कि A+ and A grade cities? Are you trying to expand there and trying to bring kids वहाँ से, कि अभी आपका जो इतना जहाँ तक आपकी रीच है आप उसी में ही अभी फ़िलहाल सेटिस्फाइड है? नहीं, हम तो चाहते हैं कि सभी स्टेट से हों, लेकिन हम एज ए नेशनल फेडरेशन सब जगह पहुँच नहीं सकते. हम डिपेंड करते हैं वहाँ के जो स्टेट्स के जो कोचेज़ हैं, वहाँ के जो ट्रेनर्स हैं, वो इंटरेस्ट लेके बच्चों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो काम तो वही कर सकते हैं. और बच्चा जितनी छोटी एज में सीखेगा उतना ही वो जल्दी सीखेगा और उतना बेहतर करेगा. क्यों, जो बच्चे थोड़ी एज से बाहर, जैसे 10 साल या 12 साल के बाद में शुरू करते हैं, उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है. उनमें वो कैपेबिलिटी जो है, जो टेक्निक सीखने की है, वो भी उनको थोड़ा टाइम अधिक लगता है. इसलिए बेहतर रहता है कि जितना बच्चा जल्दी सीखे उतना अच्छा रहता है. और अभी हमने देखा, अभी हमारी चैम्पियनशिप में एक छोटी बच्ची थी जिसकी उम्र थी केवल 4 साल. तो 4 साल की उम्र में यदि बच्चा सीख रहा है तो बहुत अच्छी बात है. वेरी नाइस. तो अर्लियर दे लर्न द बेटर इट इज. So you mean to say जितना जल्दी छोटी उम्र से बच्चा सीखना शुरू करेगा, उतना ज़्यादा वो स्पोर्ट के अंदर ग्रो करेगा, right? But what happens if in case you get students who are not that young, say 7, 8 या 10 साल का कोई बच्चा आके सीखना चाह रहा है, do you also let them apply and be a part of the basic Sure, definitely. We always welcome them and we always motivate them. We never stop them. So it's like everyone's welcome in this skating ring out there, पहले तो नॉर्मली यही होता था कि 7-8 साल के बाद ही बच्चे आते थे, बट अभी छोटे बच्चे आने शुरू हुए हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है. तो वी आर ऑल्सो हैप्पी. Okay, sorry, but one thing that I think we were discussing earlier also, which is that there are natural ice skating rinks, which is obviously you said in Leh Ladakh and places, but Delhi ke andar is not the natural one over here. How different, or should I say, is it a good thing that यहाँ पे हमारे पास natural नहीं है and it is a man-made or actually a made artificial ring that we have over here? Does that kind of just hamper your growth in terms of learning the skill and in terms of learning skating? Is it very different from the natural one, or is it equally the same somewhere in the field? Well, when we're talking about the skating rings, there are 2 types. One is obviously the natural one, जो natural environmental
circumstances में when we can just the accumulation of water freezes overnight by the temperature and you have an ice which is there. Skating in such environment is risky. One, because it is never surfaced, it's not never a clear surface which is there. The rink which we have in Delhi is indoor natural ice skating rink. This is again the only one which is there in India available for to hold international championships or to hold any kind of training camps. Why is this? Is because this is the only rink which has a resurfacer. And through that resurfacer we can level the ice flow into a perfect level, and which is a minimum basic need for any to host any kind of discipline for figure skating, speed skating, and also ice hockey. So this rink, the training, the blades that each child has to invest in, these blades cost a lot of money, and in a natural ice skating rink with uneven surfaces as well as dirt and muck which is there, which gets in the way, and you can never be very certain on the depth of ice which is present at different obviously there's an uneven surface. So such aspects and such environmental conditions hamper children to skate and learn to skate. When you see the Western world, when you see other rinks which are there across the world, it always started with frozen lakes and people starting to skate on them. Shimla ice skating rink, the club at Shimla is one of the oldest clubs for figure skating and the sport of ice skating in the world. They're about to complete 100 years in a few, I think so, they've completed about 96 years. Wow. And such clubs were promoted by the Britishers. The concept, the sport of ice skating and ice hockey was brought into India through the Britishers. But yes, this sport has grown from just a frozen lake to people coming to ice skate. To the 14th year yes, of the to championship. the 14th year to the national championship. As well as we have another rink which is available in Dehradun. This rink unfortunately is not working. This infrastructure is there with the government of India, and which was part of the Winter Games in 2011. Unfortunately, this rink is not working because of obviously the high cost, the high energy costs that comes around to work such a concept. But there are ways and means in which we have understood how to run the rink, and we are proud to say that we are saving on energy, we are saving on the process, as well as we have the technical knowledge running the rink since 2011 at Gurgaon. So we've always approached the government, we've always approached authorities that rink be given, and because now we see that there is this this demand, there is this growth that the sport has seen now. So it becomes there's a balance that can be seen. Yes, and that's obviously been achieved over a period of hard work and putting your entire brain work into process and then working it out gradually year by year. Yes. I think it's the 14th year of the championships this year, and here's wishing you all the very best. May you have a lot more people on board like Luboy Fovia and much more coaches and mentors who can just guide the kids. It's a pretty much upcoming sport and you're doing your bit. Thank you so much, gentlemen. Thank you so much, Luboy. Thank you so much, Karan Lalan. Thank you, Karan. Thank you. Always a pleasure, and once again, all the very best to all of you for all the future. If you permit me, just I would say one thing. Ji, zarur. Today, our Indian team is participating in the International Skating Union Junior Grand Prix Figure Skating Championship taking place in Poland. Oh wow. 4th, 5th and 6th of October, the championship is there. Yes. So one boy and one girl, Nikhil Pingle and Ishita Kapoor, they are representing India over there. So here's wishing Nikhil and Ishita all the very best. May you go there and rock. It's a great initiative, and may you live your dream there and just come back doing all the best you could put into the sport. Thank you once again, gentlemen. Thank you, Luboy. Been a pleasure. दोस्तों, इसके साथ वक्त हो गया हमें भी आपसे विदा लेने का. अगले बुधवार शाम को 5:30 बजे फिर से आपसे होगी मुलाकात. Till then, have a lovely week ahead. Goodbye.